are right now in the 4th unit. In that, we have completed the formation of soil, different soil types, then different flora, fauna, ये सबके बारे में पढ़ा है. Today, we can discuss about the conservation of forest and the wildlife. What is this forest and what is the importance of this forest, and what are the importance of conserving this forest, and what are the methods that we follow in conserving this forest and this wildlife. That is what we are going to discuss today. So when we say about the forest, the FAO 2018 has explained the forest as land spanning more than 0.5 hectares. There will be 0.5, minimum half hectares of land honi chahiye with trees higher than 5 meters and a canopy cover over 10%. Abhi ek area hoga, nahi to there will be an area that covers minimum 0.5 hectares of land which covers trees having height of minimum 5 meters. And the canopy cover, that is the canopy means the upper portion, wo tree ka jo upper ye jo aata hai, this is actually the canopy cover. The canopy cover should be minimum 10%. Then only a particular space we can say it as a forest. So this canopy cover or the tree cover should be 10%, and this threshold that should be in situ or on that particular area में होनी चाहिए. अभी एक tree हो, एक space होगा. Even though if there is no 10%, still there is possibility of becoming 10% or more canopy cover, and the tree's height will come minimum 5 meters के ऊपर आ जाएगा. Then that area we can say it as forest. But even if these criteria were satisfied, ये पूरा area criteria को satisfy कर दिया, फिर भी if this area is a predominantly agriculture area होगा, नहीं ये तो urban land use, नहीं ये तो कुछ settlement उसी area पे ज़्यादा है, then that area cannot be considered as forest. Say for example, अभी टी कल्टीवेशन है तो उसके उधर बीच बीच में प्लांट्स होगा. Even if the plants has more than 5 meters के ऊपर है and इसका canopy cover overall लेने से 10% के ऊपर है, then also that area we can't say it as a forest. Forest may be artificial or the natural, that is acceptable, but if it has if the coverage area should become a agriculture area or an urban land use area, then we can consider that as a forest. The forest region, this is a place where most of the species, whether it is animal, whether it is plant, they will found together. They will make an ecosystem of their own. जो भी forest cover, whether it is a evergreen forest, whether it is a deciduous forest, whether it is a tropical savanna forest, whether it is a taiga or tundra forest, जो भी हो, there should be animals and plants that adopted to that particular ecosystem in that forest area. So this is what a forest is. And the coverage, if we take the whole earth, we know that it is mostly covered, it is mostly oceanic. But when we take who is that? Okay. But if we take, please mute your mic. Yeah? Okay. If you take the land area, not the ocean or the fall surface, but if you take the land area, about 31% of the whole land area is covered by the forest. So that much of relevant is the forest. That much of extension has been given to this forest coverage.
There is two type of forest. One is primary forest, second one is secondary forest. So primary forest, from the name itself, it is the naturally formed forest coverage area. Naturally generated forest area with native trees species. इसमें होगा वो particular area, the tree species is adapted to that particular climate, that particular soil, that particular drainage, इसका सब adaptive होगा this particular tree species. So native tree species ही उसी area पे होगा. There are no clearly visible indications of human activities. उधर कभी भी human activities नहीं होगा. And the ecological processes are not significantly distributed. वो पूरा जो भी activities है, that is particularly limited to this area. वो अपना for ecological activities है, वो forest के अंदर ही होगा. So बाहर का कुछ interference इसके अंदर नहीं होगा. And even there is no trace of human activities as well. तो primary क्या होगा? प्राइमरी फॉरेस्ट में क्या हो, मेनली द ट्रीज आर नेटिव इन कैरेक्टरिस्टिक होगा अपना सा, जो इंडिविजुअल वो उसी जगह पे इंडिजीनियस होगा वो ट्रीज. एंड अपना सा देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. व्हेन देयर इज ह्यूमन एक्टिविटीज वी नो दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ obstruction or some sort of interference happens to the natural habitat. तो उसी को interfere नहीं कर पाएगा because there is no indication of human activity. That is, so that kind of forest we can say it as primary forest. But when we consider the secondary one, the forest that has been logged and has recovered naturally or artificially. So when sometimes we say it as अभी जो भी आर्टिफिशियल हो नेचुरल हो, बट ये तो सेकेंडरी होगा, उसमें नेटिव ट्रीज ऐसा कुछ ये जो ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो. अभी फॉरेस्ट प्लांटेशन आप लोग सुना होगा, वो फॉरेस्ट प्लांटेशन कैन बी इंक्लूडेड इन दिस फॉरेस्ट कवर, सेकेंडरी फॉरेस्ट कवरेज एरिया. Sometimes when you study about particular state and it is saying that the forest coverage has been increased, that doesn't represent a natural increase usually. That is that natural that area is being created by the humans through forestry. Through forestry वो जो हम लोग अपना से करेगा, that is actually that is artificial, that is being created artificial. That comes under the scope of secondary forest. तो इसमें है ऐसा है, not all secondary forests provide the same value of sustainable biological diversities. That is the main thing. So यहाँ कैसे है, अभी हम एक forest बना रहे हैं तो हम खुद से बना रहे हैं. Usually I will plant a particular species like eucalyptus. तो पूरा जगह पे क्या होगा, ऐसे यूकैलिप्टस प्लांट ही होगा. नहीं, इफ आई एम मेकिंग ऑरेंज ट्रीज तो पूरा एरिया पे ऑरेंज, तो उसमें डाइवर्सिटी होने का चांसेस बहुत कम है. व्हेन द प्लांट्स आर, व्हेन फॉरेस्ट इज ग्रोइंग बाय नेचुरल वे, अपना से हो रहा है, देयर विल बी डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज. जो प्लांट स्पीशीज हो, जो एनिमल स्पीशीज हो, जो भी हो, देयर विल बी डाइवर्सिटीज. That is the main difference. प्राइमरी में होगा नेटिव ट्रीज अपना से खुद से वो क्लाइमेट को अडाप्टिव होगा, सोइल को अडाप्टिव होगा, ड्रेनेज और वाटर को अडाप्टिव होगा, वो उसी एरिया का ट्रीज है. बट यहाँ कैसे है, दैट इज बीइंग प्लांटेड समटाइम्स. मे बी इट इज सेकेंडरी प्लांट होगा. अभी एक फॉरेस्ट शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर दिया, उसके बाद वो लैंड को छोड़ के गया है, तो क्या होगा, नेचुरली लेटर ऑन नेचर ने अपना से बना देगा उसी एरिया पे अगेन ट्रीज. तो उसमें उतना बड़ा ट्रीज तो नहीं होगा, उसके लिए तो टाइम चाहिए, तो उतना बड़ा ट्रीज तो ऐसा नहीं हो जाएगा. बट देयर विल बी स्पीशीज, naturally created species. But instead, if it is being artificially created, that is also come under the scope of secondary. इसमें क्या होगा, if it is being artificially created or the human made है, तो इसमें biodiversity नहीं होगा. There will be a particular species or there will be minimum species type. Nature अपना से बना से multiple diversities होगा इसके अंदर. That is the main difference. And the requirement of forest, what अभी forest के बारे में बोला है,
तो देयर इज सम रिक्वायरमेंट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन का अपना कुछ रिक्वायरमेंट्स है, व्हाई इट इज टू बी प्रिजर्व्ड। द ह्यूमन पॉपुलेशन हैज बीन ग्रोइंग, अभी हमारा अभी 2000 ईयर्स अब पास लेने से there has been immense growth in the population. So if you take the population growth, it will comes beyond 20 or 25% के ऊपर है, sometimes it will go 50% के ऊपर। अभी जो 50,000 years के जितना भी population था उसके डबल और ट्रिपल और बहुत टाइम मल्टीप्लाई हुआ है हमारा population। मोर देन 7 बिलियन population है हमारे लिए अभी within this 2000 years होने से 200 years के अंदर से। एंड इसके वजह से क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज इन डिमांड, वो रिसोर्स का डिमांड को ज्यादा चाहिए। तो व्हाट आर द रिसोर्स मेनली रिक्वायर्ड, नेचुरल रिसोर्स। वन हो गया पावर और एनर्जी रिसोर्स एक साइड में, दूसरा है फूड रिसोर्स चाहिए, तीसरा है फूड रिसोर्स बनाने के लिए एग्रीकल्चर लैंड्स चाहिए। सो लैंड एज वी नो इट इज लिमिटेड, एग्रीकल्चर लैंड्स आर लिमिटेड। तो क्या होगा, एनक्रोच करेगा कौन सी एरिया पे, दोस एरियाज विच इज नॉट बीइंग यूज्ड बाय द ह्यूमंस जो एरिया पे एनक्रोच करेगा वहां पे हम लोग पहले से यूज नहीं किया है। सो दैट एरिया यूजुअली कम्स अंडर द स्कोप ऑफ नेचर, उस नेचर का अपना जगह है। ये जगह पे अभी बहुत कुछ लैंड्स होगा, इसमें से मेन लैंड है दिस फॉरेस्ट कवर। नहीं तो कुछ वेटलैंड एरिया होगा, नहीं तो कुछ स्क्रब रीजन्स होगा, जो भी हो वो रीजन से अलग हमको एक ऐसा रीजन चाहिए फॉर एग्रीकल्चर, दैट शुड बी फर्टाइल होनी चाहिए, देयर शुड बी इनफ ड्रेनेज होनी चाहिए, द क्लाइमेट शुड बी अडॉप्टेबल होनी चाहिए। सो वी विल डायरेक्टली अडॉप्ट, कौन सी एरिया को अडॉप्ट करेगा, दैट फॉरेस्ट एरिया को वी विल अडॉप्ट इट। That is how we are exploiting this ecosystem, forest ecosystem. The human population has grown exponentially over past 200 years or more. This growth continues to increase rapidly. अभी ये कम नहीं होगा. This will be steadily increase. The growth in turn exploits the natural resource on the planet. इसके वजह से क्या होगा, create imbalance in the ecosystem. हटन का एक थियरी है, कंस्ट्रक्शन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। इसका मतलब है जो भी कंस्ट्रक्शन ह्यूमन कंस्ट्रक्शन है दैट विल क्रिएट डिस्ट्रक्शन टू द नेचर का डिस्ट्रॉय करेगा। जितना भी हम लोग बोलेगा दैट इज अ क्रिएटिविटी और क्रिएशन, बट देयर विल बी डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचर, सो दैट्स क्रिएट इम्बैलेंस। तो यहाँ क्या है, यहाँ होगा फॉरेस्ट और वाइल्ड, फॉरेस्ट के अंदर ही वाइल्ड लाइफ है, तो इसके अंदर if we start constructing something, if we are making agricultural land that is useful for humans, but that is an encroachment to the other animals and plant species के लिए that is an encroachment, we are exploiting. The growth and development also endangers the habits and the existence of various type of wildlife, or animals हो plants हो, इसका habitat को we will exploit it. That is how the requirement of conservation comes. So what are the other threats if we destroy that? That will create hostile species, जो attacking species है। खुद अभी टाइगर ये सबको एक जगह से दूसरे टाइगर को माइग्रेट करने के लिए फोर्स कर होगा, तो उसी एरिया का दूसरा वो एक इकोसिस्टम उधर होगा, ईटिंग एंड बीइंग ईटन, देयर विल बी अ फूड चेन that is being followed at that particular area. वो एरिया में फूड चेन होगा। इसमें क्या होगा, वो हॉस्टल स्पीशीज आने से दे विल स्टार्ट ईटिंग दिस स्पीशीज, हेर्बिवोरस तो उसको तो ज्यादा खाने का शुरू करेगा, सो दैट विल अफेक्ट द फूड चेन। ऐसा बहुत कुछ प्रॉब्लम इसके अंदर से होगा। देन वी नो दैट इफ वी डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट, ऑफ कोर्स द क्लाइमेट चेंज, हमारा जो वेजिटेशन कवर कम हो गया है। वी नो दैट the forest is actually a carbon sink area है, कार्बन डाइऑक्साइड को मैक्सिमम उसी एरिया में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने से देयर विल बी इंक्रीज इन टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ज्यादा होगी। इफ देयर इज इंक्रीज, यू मे हैव स्टडीड अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट तो ऐसा है, कार्बन डाइऑक्साइड होने से
दैट विल अट्रैक्ट द लॉन्ग वेव रेडिएशन को अट्रैक्ट करेगा, तो उसी एरिया पे टेम्परेचर ज्यादा होगा. सो आई से we know that global warming is a process that is happening on the surface. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा ग्रीन हाउस गैसेस को ये फॉरेस्ट अब्सॉर्ब कर रहा था, लेकिन when there is decrease in the forest coverage, there will be increase in the carbon. Even along with that, we are emitting carbon dioxide too much to the atmosphere, so that will cause change in the climate. Another one is pollution. Pollution होगा इसके वजह से. how that happens? Pollution अभी ये डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो एयर पोल्यूशन उसी वजह से बहुत ज्यादा हो जाएगा. एंड इफ वी स्टार्ट सेटलिंग एट देयर, इफ वी स्टार्ट एग्रीकल्चर, उधर का पानी खराब हो जाएगा. ऐसा बहुत कुछ पोल्यूशन होने का चांसेस भी है. एंड अनदर थिंग इज टू मच ऑफ हंटिंग, टू मच ऑफ फिशिंग, टू मच ऑफ पोचिंग. तो एनिमल फॉर हंटिंग करेगा एनिमल्स को, उसका स्किन के लिए, मीट के लिए, ये सब चीज के लिए अभी we will hunt it, we will kill the animals. So उधर फूड चेन का अफेक्ट करेगा, इकोसिस्टम को अफेक्ट करेगा, all this. तो इसमें से there will be some species which come to endangered species होगा वो सब. So these are the things that makes a forest area or the wildlife area a conservative area बनाता है. Then induced ecosystem, mangroves, plants and animals. So ये प्रॉब्लम को सोल्व करेगा सोच के हम लोग क्या करेगा, दिस इज द मेन प्रॉब्लम. वी विल क्रिएट फॉरेस्ट, क्रिएट करेगा ना, ये तो उसमें फोर्सफुली एनिमल्स को लेकर दूसरे जगहों पर डाल देगा. whether they can survive? No, it is not possible for them to survive. Otherwise there will be uniqueness, तो species diversity नहीं होगा. There will be single species. Single species होने से that will again affect the environment. Continuous, अभी एक जगह पे पूरा रबर प्लांटेशन है, it is actually equal to the tropical rainy forest के equal है, उधर का climate वो ऐसा बनेगा, but at the same time it will exploit the groundwater. So for a single species, there is on opposite side there will be some kind of problem as well. So these are the problem that is being generated because of over exploitation of this forest and wildlife. इसको तो solve करना है. So there the need of requirement of conservation. तो इसको तो ऐसा exploit करेगा, तो ऐसे होने से exploit हम लोग कर दिया है, ऐसे कर दिया है, वो हम बोलते हैं. So what are the uses of this forest? What are the uses of these animals? We have told different problems created by humans and different issues faced by these animals and or the diversities and species diversities. तो इसका use क्या है? The main thing is to maintain the balance of gases in the atmosphere. As I said, carbon sink area होगा forest. So forest, it will produce oxygen, it will release oxygen to the atmosphere, huge amount of oxygen that is being consumed by the animals, and for their respiration oxygen is must. Air release करेगा. दूसरे साइड में क्या करेगा? It will sink, it will absorb carbon dioxide. So reducing carbon dioxide and increasing the oxygen level. So life is possible only if there is enough carbon dioxide and enough oxygen. If the amount of carbon dioxide increases, that will create some sort of problem. And if there is no oxygen, that will create another source of problem. So there will be imbalance. So balancing these gases, there should be enough forest cover or the canopy cover. Then to reduce pollution level on the earth by reducing the level of carbon dioxide in the atmosphere. तो हमारा जो भी emissions है, that includes this carbon. अभी factory से है, vehicle से है, जो भी emission हम लोग कर रहे हैं, the humans are doing, that will increase the level of carbon on the atmosphere. So इसको तो absorb करना है, नहीं ये तो air pollute होगा.
देयर विल बी चांस ऑफ एसिड रेन होगा, बहुत कुछ इसके कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, बहुत कुछ प्रॉब्लम इसके वजह से होगा. So for reducing that, these forest trees canopy cover, it is very much required to maintain the temperature. So when I said about in the last time also, last slide में भी बोल दिया है, क्या होगा, ऐसा है, अर्थ के अंदर इंसुलेशन आएगा, that is in short wavelength का ऐसा ऐसा radiation अर्थ के अंदर आएगा, and this is the surface. When it hits the surface and when it's go back, it will go as long wave radiation जैसा इसका movement है. What this carbon dioxide does, it will absorb these long waves. ये long wave को absorb करेगा. So it can't escape. These long waves can't escape back to the atmosphere so easily, because the carbon dioxide will absorb it, or carbon dioxide will prevent this long waves radiation. That is actually long wave radiation is actually the heat radiations to escape directly back to the atmosphere. For the earth, this is a very essential thing. अभी lower atmosphere को minimum temperature देने के लिए this process is very much required. But think that if the amount of carbon dioxide is increasing, तो इसका response क्या होगा? The temperature, the lower surface temperature will also start increasing. There should be an optimum level. वो नहीं हो रहा है. Optimum level नहीं हो रहा है. इसके वजह से population अभी lower atmosphere में temperature ज्यादा हो गए. That is called the global warming effect. तो इसको तो reduce carbon dioxide को reduce करना है. Who will do it? The plants will do it. The trees will do it. But if you are cutting these trees and plants, that will certainly increase the number of carbon dioxide, amount of carbon dioxide in the atmosphere. That is how it is saying that to maintain the temperature, the forest and the tree cover is very much required. Then to maintain the nutrients, then nutrient content, the texture, and improve the fertility of the soil. So soil is made of minerals. We know that rocks break occur, soil bend. When we studied about the formation of soil, we have discussed that. तो उसी टाइम में हम बोला है इसके अंदर almost 20 to 25% होगा humus content. ये humus content कहाँ से आएगा? It will be created by the dead remainings of animals, otherwise the excretions of these animals and the plants. अभी plants का leaf होगा, वो सूखा होगा, it will fall into the soil में गिर जाएगा. नहीं है तो वो पेड़ पत्ता और animals मर जाएगा, वो उसके अंदर वो soil में आ जाएगा. Then it will provide humus. नहीं ये तो इसका excretion के वजह से. So all these provide humus to the soil, which is part of fertility. Soil को ये fertility देता है. So if there is no soil, if there is no animal, if there is, what will happen? The soil will lose its fertility. So this forest cover or tree cover or the animals is contributing to the fertility of the soil. Then to maintain the level of groundwater. सोचो if it is there is a slopy region and यहाँ बारिश गिरा है, तो यहाँ से कैसे होगा? ये डायरेक्ट ऐसे नीचे जाएगा. There is no conserving factor. Water will fall, it will go as runoff. Runoff जैसे है तो नीचे जाएगा. But if there is a tree in between, एक बड़ा tree है which is deep rooted, ऐसा deep rooted trees है इसी जगह पे, तो क्या होगा? पानी यहाँ तक आएगा और इसको तो यहाँ से नीचे नहीं जा पाएगा, तो it will यहाँ आ जाएगा. इस region में पानी fill हो जाएगा. So it will help to maintain the groundwater, especially in irregular terrains में इसका जरूरी है. Then to maintain the balance of ecosystem and food chain.
तो ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज द बैलेंस। इसके लिए तो स्पीशीज डाइवर्सिटी चाहिए, देयर विल बी इनफ कार्निवोरस चाहिए, इनफ ओमनिवोरस चाहिए, इनफ हर्बीवोरस चाहिए, एंड देयर विल बी हर्ब्स और द प्लांट्स और द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स चाहिए। If there is no primary producers, there will not be any herbivorous. If there is no herbivorous, there is no omnivorous or the carnivorous. So the entire system will collapse. So there should be optimum distribution of all the species diversities. The same telling here. So it will maintain the biodiversity. Biodiversity is very much required. Then what are the other factors these forest, trees and animals are providing? Provides oxygen. Oxygen यहाँ provide कर रहे trees. Without trees, oxygen release नहीं होगा, तो यहाँ life कभी भी नहीं होगा. End of life on the earth surface. Play a specific and significant role in carbon cycling. This is very important. क्या होगा? For producing food, the trees will absorb the carbon. ट्री होगा, एटमॉस्फेयर में कार्बन होगा, तो इसको तो CO2 को ये एब्सॉर्ब करेगा. फॉर प्रिपेयरिंग फूड, इसमें क्या होगा? इट विल स्टोर कार्बन. ये कार्बन अपना से सेव करेगा. जो एनिमल्स है who will eat this plant, वो प्लांट्स को खाता है. अभी कुछ हम लोग भी जब वेजिटेरियन फूड खाता है, some amount of this carbon will enter into our body also. तो हमारा बॉडी के लिए भी कार्बन चाहिए फॉर एक्सिस्टेंस. तो सब के लिए ये प्लांट डिस्ट्रीब्यूट करके देगा. When this tree decay and fall down, या तो नीचे गिर जाएगा, it will move to the soil. सोइल में जाएगा, जो नीचे का सोइल है. अभी एनिमल्स है तो एनिमल्स के अंदर when it die, it will release to the atmosphere. ऐसा यहाँ आ गया. फिर यहाँ से अभी कुछ ऐसे यूज करके इस एनर्जी रिलीज होके एटमॉस्फेयर में ये वापस आ जाएगा. सो देयर इज अ साइकिल दैट इज हैपनिंग. तो ये साइकिल को कार्बन, दिस इज कार्बन साइकिल इसे बोलते हैं. तो ये कार्बन साइकिल को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. वन इज एनिमल्स, अनदर वन इज प्लांट्स. वी आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कार्बन साइकिल. लेकिन हमको पता नहीं हम लोग क्या कर रहे हैं ना. हम लोग खाता है कार्बन, हम लोग अपना से लेता है. व्हेन वी डाई वी विल गिव दैट टू द नेचर को अपना से देता है, एंड नेचर विल अगेन गिव बैक टू दिस प्लांट, प्लांट को देता है. ऐसे एक साइकिल बन गया है. देन फॉरेस्ट प्रोवाइड ए सोर्स ऑफ लाइवलीहुड टू मिलियंस अराउंड द वर्ल्ड. फॉरेस्ट रिसोर्स इट इंक्लूड्स अभी जो मेडिसिनल प्लांट्स है ना, ये तो वुड इंडस्ट्री घर बनाने के लिए चाहिए, ना ये तो जो भी पहले पेपर बनाने के लिए चाहिए, बहुत चीज के लिए फॉर मल्टीपर्पज. अभी इवन द डीके ऑफ दिस फॉरेस्ट विल क्रिएट अभी पीट और कोल बन जाएगा. ये मरने के बाद बहुत साल स्टोर करके मिट्टी के नीचे होने से दैट विल कन्वर्ट टू बी कोल. तो इट्स ए एनर्जी सोर्स. कोल इज एक्चुअली प्योर कार्बन है. कार्बन साइकिल में ये भी आएगा. तो ऐसे कार्बन होगा नहीं, ये तो ऐसा कुछ बहुत कुछ चीज है. अभी लाइवलीहुड के लिए तो क्या करेगा? हम लोग फॉरेस्ट में जाएगा, उधर से कुछ रिसोर्स को लेकर बाहर भेज देगा, बाहर बेच देगा. तो क्या होगा? देयर विल सेलिंग. तो दैट विल गिव सम अर्निंग्स टू द दैट पर्टिकुलर ह्यूमन. तो ये लाइवलीहुड के लिए है. ये तो डायरेक्ट कंज्यूम करने के लिए फॉरेस्ट बहुत कुछ देता है फॉरेस्ट रिसोर्स के नाम से. तो दैट इज very much essential. Then forest provides wood. So wood also I said already mentioned. Then prevents from multiple disaster. तो ये कैसे होगा? If you look, अभी हमारा इधर भी देखने से in the slopy area, if there is good vegetation cover, there is reduction in the landslide. Landslide उसी एरिया पे कम होगा.
बिकॉज डीप रूटेड प्लांट्स तो ऐसा होगा, स्लॉपी एरिया है, इफ इवन दो वो सोइल इज नॉट दैट मच कंसोल्टेड, वो कंसोल्टेड नहीं होने से भी वो प्लांट्स का जो रूट्स है ना वो डीप रूट में जाएगा, तो इट विल नॉट अलाउ ये जो लूज मटेरियल को नीचे आने के लिए, इट विल नॉट अलाउ, इट विल क्रिएट ए, अभी हम लोग जैसे नीचे कंक्रीट का वो ब्लॉक बनाता है ना, इतने उससे अच्छा है ऐसा प्लांट को उधर देखने से, so it will prevent that kind of disasters like landslides कम होगा, जैसे ग्लोबल वार्मिंग को ये तो रिड्यूस करेगा, ऐसा बहुत कुछ चीज को एक कंट्रोल करेगा विदाउट डायरेक्टली इन्वॉल्विंग डायरेक्टली, it will not seem like the plants are saving, but they are doing it. Then we know that it has lot of medicinal values, lot of medicinal plants in the forest, and finally it regulates climate, so climate को ये control करेगा. So these are the uses of these forest trees and plants. इसमें से ये सब चीज ये देता है. More than this you will get lot. Then steps to conserve forest. What are the steps that should be followed? ये तो इतना देता है. If there is no forest, if there is no trees, if there is no animal diversities, eventually or finally it will affect the humans, because we are also part of animals. Animal system का part ही है. तो ये सब चीज नहीं है, ट्रीज नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, डेथ, कार्बन साइकिल नहीं हो रहा है, टू मच ऑफ टेम्परेचर, फाइनल डेथ. तो देयर इज नो human race without all these things. So we have a duty to conserve these forests or the wildlife. So what are the steps we are to follow? First one, introducing afforestation and reforestation programs. So there is two terms. One is afforestation. Second one is reforestation. Afforestation is that अभी नया एक जगह पे we are planting trees. एक न्यू जगह मिला है, we are planting trees. But still I said there is no diversity, but it will provide these, जो भी हो वो trees हम बना देगा, it will provide, it has its own uses. ऑक्सीजन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करेगा, वो ऐसा बहुत कुछ चीज है. So afforestation is a good practice to save forest. Then reforestation ऐसा है, just like the shifting cultivation or zoom cultivation कैसा है, we will burn the forest. तो उसी एरिया पे if we again plant trees after the cultivation, if we again plant trees on the same area, soil का अपना fertility है, soil का अपना drainage है, वो एरिया का अपना climate है, so there will be good growth of trees. So reforestation उसी एरिया पे, so environment friendly हो गया है. So these are the first method to be followed. बहुत ज्यादा forest coverage होनी चाहिए. If you look, we know that in Arunachal में 80% of the area is forest, but last 10 years लेने से it has come to 79 point something area हो गया है. देखने में छोटा सा percentage है, but if you take it in hectares, it will go beyond 100 hectares. 100 उतना सा कम हो गया है. When we take the whole geographical area, the forest was covered 80%. वो सोचना है तो कितना percentage area नहीं, कितना hectares of forest cover has been reduced from the early state. That should be noted. Then the second one is controlling forest fire. Forest fire itself is a kind of deforestation. Deforestation जैसा same चीज है. Forest fire होने से बहुत ज्यादा. If you heard the अभी Amazon में continuously forest fire and it will take अभी ऐसा kilometers of forest area को ये forest cover, ये तो पूरा एरिया में forest fire होता है. तो क्या होगा, उसी पूरा एरिया में पूरा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होगा. एक्चुअली
द कार्बन सिंक हम लोग बोलते हैं वो अर्थ का कार्बन सिंक है, मेन कार्बन सिंक है अमेज़न फॉरेस्ट। तो उसी एरिया पे इफ देयर इज फॉरेस्ट फायर, हाउ मच ऑफ environmental consequence is happening at that place. So it's a kind of deforestation type of, so prevent that forest fire, prevent the forest fire. Then proper utilization of forest resource. जो forest देता है, you have to use that, don't exploit it. Use the resource which is being given. उसके अंदर घुसता है, जो सूखे हुए पेड़ को लेता है अभी फायर लेने के लिए नहीं, तो जो मेडिसिनल प्लांट वो देता है, ये सब all these things can be used, but don't overuse that or over exploit it. We know that this Arunachal Pradesh has lot of groundwater potential. We have enough rainfall. That is why you are seeing too much of bamboo. Bamboo is a plant which is mainly growing in watery area. Too much of water uska to chahiye. We have enough water, but if we continue deforestation, it will affect the climate. It will affect the rainfall. It will affect the precipitation. Naturally, it will affect the groundwater potential. तो बहुत ज़्यादा problem होने का chances है. Use that properly. This is not the statement to the Arunachal Pradesh. It is saying to everywhere where there is forest. Then proper care should be taken to protect the forest from pests and diseases. अभी कुछ एरिया में ऐसा है, प्लांट्स के ऊपर देयर आर लॉट ऑफ डिजीजेस होने का चांसेस है, बट वेयर इट इज कंपैरेटिवली लेसर इन फॉरेस्ट एरिया बिकॉज द फॉरेस्ट प्लांट्स को वो रेसिस्ट करने का अपना सा पावर है। तो ये प्रिवेंट करना है अभी ज्यादा ऐसा कहीं पे देखने से। देन गिव अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, and also tell the people about the importance of forest awareness. वो climate change किसके वजह से हो रहा है, what happens if we deforestation के वजह से, how it will affect the climate of will locally change होगा, globally change होगा। people को ये awareness देना है इसका importance के ऊपर। then youth must encourage to plant and look after the plants. तो ऐसा है, this should happen in school level. School level से शुरू करने से kids है, वो children है, उसका तो समझ में आएगा the importance of plants and they can be encouraged. तो बाद में अपना life में they will give importance to these trees and plants. Then various afforestation programs, reforestation or afforestation programs conduct करना है। अभी environmental day में we will plant, so that is an awareness program, or इसी time we are afforestation, we are planting trees। अभी world environmental day में we are celebrating it, so ऐसे बहुत कुछ days बनाना है that will help to conserve the forest cover। Then comes the conservation of wildlife। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम अभी ह्यूमंस को ऐसा है, वी आवर इकोसिस्टम वी यूजुअली कंसीडर सोसाइटी है। अभी इफ देयर इज नो सोसाइटी वी विल गो बैक टू द नेचुरल इकोसिस्टम में जाएगा, बिकॉज वी हैव द फैसिलिटी। इफ कुछ चीज नहीं है तो हम लोगों को बाहर से लेके आ सकता है, बट फॉर एनिमल्स, अदर एनिमल्स, they should have a minimum climate level। अभी कुछ एनिमल्स को ऐसा है वो कोल्ड रीजन में ही होगा। टेक फॉर एग्जांपल हमारा मिथुन, इट कैन बी सीन इन द ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन में यू कांट सी मिथुन बिकॉज इट इज पॉसिबल फॉर दैट एनिमल्स टू लिव इन ए टेम्परेट और कोल्ड रीजन में ही इसका प्रेजेंस होगा। सो इट शुड स्टे इन दैट प्लेस। तो इसके लिए तो इकोसिस्टम का प्रिजर्व करना है। सो कंसिडरिंग दिस,
डेवलपिंग प्रोटेक्टिव एरियाज, तो एरिया को प्रोटेक्ट, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना, बायो रिजर्व को होनी चाहिए. So we can create national parks, we can create wildlife sanctuaries, we can create bio reserves. ये सब बना सकता है to protect the animals and their habitat. The endangered and vulnerable species can be kept in captive in places as zoos and breed to increase breed to increase their population. कुछ ऐसा animals होगा that is almost in the verge of extinction, like some species like some tortoise species तो ऐसा है, नहीं तो अभी tiger reserves ये सब क्यों बनाता है? Because their number is comparatively lesser, so they have to be protected. Otherwise वो तो एक बार जगह दुनिया से गया खत्म, फिर वापस लेने के लिए हमारे पास कुछ चीज नहीं है. So they have to be given special care. इसको तो क्या करेगा, उसमें से कुछ स्पीशीज को उड़ा के ऐसा कैप्चर्ड एरिया में देखना है, उसको तो ब्रीड करने के लिए चांसेस देना है, उसका पॉपुलेशन ज्यादा करना है. दैट इज व्हाई वी हैव डिफरेंट रिजर्व्स. अभी काशीरंगा नेशनल पार्क, नहीं तो टाइगर रिजर्व पार्क, ऐसा बहुत कुछ है. व्हाई? फॉर इंक्रीजिंग देयर पर्टिकुलर रिनोस का पॉपुलेशन ज्यादा करना है, टाइगर का पॉपुलेशन ज्यादा करना है, ऐसा एंडेंजर्ड स्पीशीज का पॉपुलेशन ज्यादा करना है. दैट इज द मेन यूज. देन कटिंग ऑफ फॉरेस्ट शुड बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. इट इज एन वो करना है फॉरेस्ट का स्ट्रिक्टली कटिंग, वो रेस्ट्रिक्ट करना है. सो बिकॉज इट इज द अबाउट वो उसका हैबिटेट है, वो तो प्रिवेंट करना है. देन हंटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स शुड बी बैन. बहुत जगहों पे ऐसा हो रहा है वेयर देयर इज अरे क्या हुआ, कोई नहीं है. Okay then.